Very good morning to all. So let's start this article. Let's start World Consumer Rights Day 2021. So on this day, today is the World Consumers Rights Day. So this article written by the Aarti Tiwari. So let's start. वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज observed every year in the March 15. वर्ल्ड कंज्यूमर जो डे होता है 15 मार्च को हर साल मनाया जाता है. द डे इज मार्क फॉर द राइजिंग ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर्स राइट्स एंड नीड सो एज टू इनेबल द कंज्यूमर टू फाइट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस. इस दिन क्या होता है, पूरे विश्व में अवेयरनेस फैलाया जाता है, जागरूकता फैलाया जाता है कि अपने राइट्स के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए, कि सोशल इनजस्टिस जो होता है, सोशल जो इनजस्टिस, उससे लड़ने के लिए, उसके अगेंस्ट बोलने के लिए. द डे एम टू राइज अवेयरनेस अबाउट द कंज्यूमर्स नीड एंड राइट एंड इंश्योर दैट दे आर नॉट सब्जेक्ट टू सोशल इनजस्टिस और मार्क अब्यूज दैट मे अंडरमाइन देयर राइट्स. तो क्या होता है इसमें, इसका एम होता है टू राइज अवेयरनेस अबाउट द कंज्यूमर्स नीड एंड जस्टिस. जो भी भेदभाव होती है, इसमें क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस दूसरे एक ही स्टेट में, एक ही कंट्री में, हर स्टेट में कहीं वेरी करता है, और कहीं कहीं पे जो प्राइस होता है बहुत ही अजीबोगरीब प्राइस होती है. जो भी राइट होते हैं उससे कुछ एक्स्ट्रा लिया जाता है. तो और बहुत सारे प्रोडक्ट है जिससे क्या किया जाता है कि प्रोडक्ट का नाम कुछ और है, उसमें जो मटेरियल है कुछ और होता है. मतलब इसको बोले तो लाइसेंस के द्वारा में, उसका प्रोडक्टिविटी के बारे में, तो उसके बारे में. द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज commemorated by country across the world by holding conference on human rights and conducting discussion on various way to protect consumer rights. तो इसमें क्या होता है, बहुत वर्ल्ड जो कंज्यूमर राइट्स डे होता है कॉमोमोरेट करता है कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, बाय होल्डिंग कॉन्फ्रेंसेस, होल्डिंग कॉन्फ्रेंस होल्ड करता है और डिस्कस करता है सारे देशों को कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, अपने राइट्स के लिए कैसे वो लोग लड़े. तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2021 थीम, तो देखेंगे कि 2021 का जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स है उसका थीम क्या है. तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2021 थीम इज टू टुगेदर ऑल द कंज्यूमर्स इन अ फाइट टू. तो क्या है, जितना भी कंज्यूमर है सब मिलकर फाइट करें. टेकल प्लास्टिक पोल्यूशन, और प्लास्टिक जो पोल्यूशन है, दिन पर दिन हम लोग जानते हैं प्लास्टिक का यूज बढ़ते गई है, जिसके कारण भयानक पोल्यूशन होते जा रही है. तो उससे लड़ने के लिए, टैकल करने के लिए टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन. करंटली द वर्ल्ड इज फेसिंग अ मेजर प्लास्टिक पोल्यूशन क्राइसिस. अभी प्रेजेंट में क्या है, पूरे वर्ल्ड जो है प्लास्टिक क्राइसिस से जूझ रही है. इवन तो प्लास्टिक इज यूजफुल इन मेनी वे, जबकि बहुत सारे प्लास्टिक का यूज होते हुए भी येट द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ इट्स हैव बिकम अनसस्टेनेबल, which call for action from all the consumers. The Consumer International Portal has gathered to photo to show how the 7Rs play an important role in tackling plastic pollution. तो इसमें क्या है, कंज्यूमर को इंटरनेशनल पोर्टल पर गैदर किया गया है, फोटो शो दिखाया गया है. 7Rs जो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने के लिए. द 7R रेफर्स टू रिप्लेसिंग. 7R का मतलब क्या होता है, रिप्लेसिंग. R फॉर रिप्लेसिंग. सेकेंड R मीन्स रीथिंग. थर्ड R मीन्स रिफ्यूज. फोर्थ R मीन्स रिड्यूस. फिफ्थ R मीन्स रीयूज. seventh R means recycles and 7R means repair. So these 7 words to make one 7Rs play an important role how to tackle plastic pollution. So talking about here the non-plastic pollutions. A global study in 2019 found that 82% of respondents are aware of plastic waste and already taking practical action to tackle plastic pollution. As a global consumer movement, we must support consumers to mobilize business, governments, and civil society to make tackling plastic pollution and sustainable consumption the easy choice for all. By 2050, it is estimated that there will be more plastic in the ocean than fish. So 1 lakh marine mammals and turtles and 1 million seabirds are killed by marine plastic pollution annually. An estimated 8 million tons of plastics enter our oceans every year. Single-use plastics account for 50% of the plastic produced every year. Half of the plastic even manufactured have been made in the last 15 years. So 40% of plastic produced is packaging and discarded after one use. So who
who is a consumer? So talking about how to control plastic pollution. So who is consumer? As per the Consumer Protection Act of 2019, a person who buys any goods and avail a service is a consumer. कोई भी व्यक्ति जो कोई भी सामान खरीदता है, गुड्स एंड अवेल करता है सर्विस को, वो क्या है? कंज्यूमर है. द डिफिनीशन हाउएवर डज नॉट इंक्लूड्स ए पर्सन हु बाय ए गुड for resale or a good or services for commercial purpose. So if talking about the history of the World Consumer Day, so let's start. The idea of World Consumer Rights Day was inspired by the President John F. Kennedy. On March 15, 1962, President John F. Kennedy sent a special message to the US Congress formally addressing the issue of consumer rights. He was the first world leader to do so. World Consumer Rights Day was inspired by the President John F. Kennedy, who sent a special message to the US Congress on 5th March 1962, in which he formally addressed the issue of consumers' rights. He was the first world leader to do so. On April 9th, 1985, the United Nations approved the General Guidelines for Consumer Protection. In the year of 1983, the first celebration of World Consumer Rights Day was marked. Since then, this was World Consumer Day is celebrated annually on March 15. So if you are talking about the original 4 consumer rights are the right to safety, second, the right to be informed, third, the right to choose, and the fourth, the right to be heard. In 1985, the United Nations, through the United Nations Guidelines for the Consumer Protection, expanded the consumer rights to include 4 more. They are the right to satisfaction of basic needs, second, the right to redress, third, the right to consumer education, and fourth, the right to a healthy environment. So, what is the objectives of the World Consumer Rights Day? Is annually international event that signifies celebration and solidarity in the international consumers movement, demanding that consumers' rights are to be respected and protected. The event also gives a chance to protect against the market abuse and social injustice which undermines those rights. So National Consumers Day, are we talking about this world and then this National Consumer Day. So every year 24th December is observed on National Consumers Day with a special theme in India. In this day, the Consumers Protection Act of 1986 had received the assent of the President. The enactment of this act is considered a holistic milestone in the consumers movement in the country. Consumers are an important part of any economy. Economically developing countries like India are progressing rapidly to create a sustain a healthy economic, and to create a healthy economic, the consumer should be happy. In India, the National Consumers Day is celebrated on 24 December each year. There are several government bodies like Consumers Forum and companies like Jago Grahak Jago are introduced or create a healthy environment for the consumers to protect and respect their rights and also control the behavior of business and corporations toward the consumers. So talking about the consumers' rights in India, consumers' rights were protected under the Consumer Protection Act of 1986. Before the Act was replaced by the Consumer Protection Act of 2019. According to the Consumer Protection Act of 2019, the definition of consumers' rights is to right to have information about different aspects of goods and services such as its quality, quantity, potency, purity, price, and standards. So if you're talking about the Consumers Protection Act of 1986 gives 6 basic rights to the consumers. First, right to choose the product. Second, right to be protected from all kinds of hazardous goods. Right to be informed about the performance and quality of all products. Fourth, right to be heard and all decision making processes related to consumer interests. Fifth, right to seek redressals whenever consumers' rights have been infringed. Sixth, right to complete consumer education. So this is all talking about the today on this day about World Consumers Rights Day. So thank you. I hope this tutorials
inform you about the World Consumer Rights Days and also the National Consumer Days. So thank you. God bless you all.